कि उसके बाद it's homecoming for me क्योंकि when I first started films like Jism and Baar, it is all about having a negative shade. right. And for me, Mohit and my first film was together. So, working with Mohit again is really, really special. He's a fantastic filmmaker. Playing a villain, like जब वो बोला कि you have to be like this. I think sometimes being a hero is boring, so it's good to play something different. Ooh. अर्जुन भाई, this one's for you. Please tell us, you're playing this character जो देख के मुझे लग रहा है, मुझे कुछ मत बोलिएगा, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अमीर घर का लड़का, एकदम ऐसा, rich dad, spoiled brat, spoiled son, like बिगड़ा हुआ लड़का. What do you have to say on that, please? ऐसा है क्या? Good casting है बोले. I would say मेरे बाप दिल से बहुत अमीर है और मैं जितना बिगड़ना चाहूँ मेरी परवरिश मुझे बिगड़ने नहीं देगी, लेकिन it's always fun to play what you're not, and I would like to believe मैं इतना बिगड़ा हुआ नहीं जितना मोहित ने मुझे कास्ट किया. But खैर, some characters suit you, some visuals connect. When I heard this film, when I heard this idea, and I worked with Mohit before, I had full faith कि हीरो तो प्ले कर चुका हूँ और इतनी बड़ी फ्रैंचाइज में अगर घुसने का मौका मिलेगा तो कुछ ऐसा ही करना चाहिए which stands out, and to play a spoiled brat or a rich spoiled brat as you called it. शायद मेरी शक्ल पे there is enough रईसियत and enough हरामीपन, I don't know, but I really enjoyed doing it, and for me I embrace different roles, so for me it was a challenge. And अगर आपको ये लग रहा है यानी कि the characters worked, अगर 2 मिनट में आपको इतना कुछ दिखाई दे रहा है तो तेरे करिए सर. लगा, बिल्कुल लगा, इसीलिए पूछ लिया यहाँ पे. Thank you so much. Tara, this one's for you. Please tell us, you're playing a singer in the movie, right? Oh no, I'm actually playing a rock star in this. Yeah. Sorry. Yeah. You'll obviously see more in the film, but it was amazing to do this with Mohit and the music team. There's so much that we have that lies ahead of you guys. So yes, a rock star. And a singer, but more a rock star. Okay, give it up for this rock star, ladies and gentlemen. Can we make some noise? Disha, this one's for you. आप विलन नहीं हो सकते. हो सकते. किसने बोला? ऐसे विलन सबको मिले. ये विलन नहीं हो सकते. आप तो the villain, right? No, I'm just playing a middle class girl with a top class attitude. ऐसा जवाब देख रहे हो? किल कर रहे हैं सब. Please tell us something about this character of yours. Well, she understands her charm and she uses it over men to get what she wants. Right. And she's not a good girl that a guy wants to take home. She's a bad girl that every guy wants to have. Yes. Mohit sir can explain better, of course. She's killed it. Mohit sir, would you like to throw some light on the element of whatever controversy तो नहीं कहूँगा sir, please. देखो ऑथेंटिक कास्टिंग की है ना मैंने फिल्म में. सच में. नहीं, I guess इतना बुरा तो हम सब में होता ही है. And I feel कि ये इतना क्या आइडिया था कि तूने अपने हीरोज के साथ दिल तोड़ा है, they've cried, जिसने कभी तुम्हारे विलेन्स के साथ थोड़ा वो दे दो. Bring out this emotion in, एक विलेन भी रोता है, उसका भी दिल भी टूटता है. And I couldn't get a better producer and a cast to make this film. Right. Because it was more than just doing a part. It was also more about enjoying this film, right. Enjoying the bad person inside you. Yeah. And thank you. But आपको ये पता था ये इतनी बड़ी होने वाली है because टॉप के 2 प्रोडक्शन स्टूडियोज, एकता जी है, भूषण सर है, तो पता है इसमें तो यही लोग चाहिए. इनसे बड़ा तो नहीं हो सकता था ना सर आप ही के लिए. I think that credit has to go to my producers. Right. Ekta said write the film, and so me and my writers team wrote it. Kanika also helped, and when I came to her with the script, she said, "Now you see where I take it." Right. And that's where we are today. So thank you Ekta for that. Wow. I'll definitely come to her. लेकिन उससे पहले भूषण सर, this one's for you. मुझे बताएं, अक्सर एक्टर्स से पूछा जाता है कि फिल्म की शुरुआत कैसे हुई, ये रोल आपको कैसे मिला, किसने कहानी सुनाई. यहाँ पे जब भारत के सबसे बड़े प्रोडक्शन स्टूडियोज साथ आते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई? How did this happen? मेरा बहुत पुराना रिलेशन है मीन्स एकता के साथ, एंड एक विलन का म्यूजिक भी we only did a T-series, and this time we wanted to take our equation further by doing a film together. Right. So उस तरीके से शुरुआत हुई. एक रिश्ता इतना पुराना है तो उसको हमने फिल्म प्रोड्यूसिंग में बदलना चाहा, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विद एकता एंड बालाजी.
and great working with Mohit. Obviously, we are doing After Ashiki this film, and I hope everybody loves this film. It's a great film. I've seen the film, so I hope audience also likes it. और विलन कौन है बता दो ना। विलन तो थिएटर में मालूम चलेगा। विलन का एक्स-रे पे जाएंगे। सर मैं कुछ ज्यादा पूछ ही नहीं रहा हूँ। एकता जी, this one's for you. Please tell us, पुराने जमाने में जब फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर फिल्में बनती थी, प्रोड्यूसर को विलन दिखाया जाता था, ठीक है? इस समय अगर मैं आपसे पूछूं, इस फिल्म में लाइक BTS में कौन है विलन? डायरेक्टर, एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स? Please sit next to her and ask this question. Actually, Honestly, मोहित कहेगा मैं ही हूँ। नहीं सर, मैं कहलवाना नहीं चाह रहा था। क्यों रिश्तों में दरार लानी है यहाँ पे? Right. रिश्तों में दरार लाना मेरा पुराना काम है। चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। इसके लिए आए तो मिल गया, मिल गया, बहुत मिल गया, ओवरडोज हो गया। इससे ज्यादा देंगे तो फिर रहेगा नहीं। चलो ऑलराइट। वो लॉकडाउन था, टाइम ऐसा था कि मोहित के साथ मुझे विलन बनानी थी, बट यू नो वी वर लाइक, हमारे पास कोई अमेजिंग स्क्रिप्ट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मोहित के पास एक आइडिया था और रोहित शेट्टी, हु इज माय राखी ब्रदर, ये आइडिया मोहित ने उन्हें दे दिया था। आई वेंट एंड मेट रोहित एंड एक दिन में उसने हाँ कह दी कि यू कैन टेक इट बैक, एंड ही सेड ये सबसे दमदार स्क्रिप्ट है, मैंने मोहित को फोर्स करके लिया था और अब तुम फोर्स करके मुझसे ले लो। आई सेड बहन का तो हक बनता है। सो मैंने ले ली और ऑनेस्टली मोहित has a tendency of being the most, he surprises you, sometimes he can really like shock you with not coming for an edit, and sometimes he's such a mad man कि वो edit छोड़ता ही नहीं और he makes some, he's a crazy genius, I have worked with lots of people and many directors, but if I have to give the mantle of crazy genius, only two men in this industry would get it, Anurag Basu and Mohit Singh. And both drive me mad. But and I have to, we don't give enough credit to writers. Aseem, stand up. Stand up, Aseem. Whatever happens to this film, I'm honored to work with a technician like you. You, Kanika, and Mohit Suri, I'm telling you this, at the launch of the film, are the reason I can say I'm proud of this movie. I saw the movie and I'm proud of this movie. And most importantly, working with Bhushan sir, the moment Mohit said, got it to me, I went straight to him. There's no better producer than him. He's definitely the hero of this film. बार hero and he's like मैं villain हूँ यार, कहाँ आज hero बना रहे हो? Hero heroines do not exist. तो यहाँ पे कुछ villain ही के लिए तैयार हो जाइए. It's over to all you wonderful people. Shoot your questions. Arjun, on your left, Villain. Hey villain, mic on करना. यही अपना विलन है। अरुण सर आइए. अर्जुन, जब भी आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो क्या आपको आपके आसपास किसी से डर भी लगता है कि विलन भी आ जाएंगे? जब एक कहानी होती है तो आपको अपनी कहानी में कभी हीरो बनना पड़ता है और कभी कभी किसी के लिए विलन भी बनना पड़ता है। तो सच्चा हो तो आप ये नहीं सोचते कि हीरो हो गया विलन हो गया, आप प्यार सच्चाई से करते हो। उसके रेपरकशंस आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे, इनके लिए कुछ और होंगे, इनके लिए कुछ और होंगे। तो इन लाइफ वेयर लव इज कंसर्न्ड, इट हैज टू बी प्योर। आप एक तरफ से देखोगे तो कोई विलन, दूसरी तरफ से देखोगे तो वो हीरो। और कैसा रहा पेरिस का एक्सपीरियंस? आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं मुझे? हाँ तो चेक कर लीजिए। अरे क्या बात है। Hi John sir, hi John sir, hi Arjun. Firstly, congratulations. The trailer looks very interesting. Thank you. My question is, I have two questions. First one is for John sir and Arjun. Arjun, it is a homecoming for you as well. You started with great characters in Ishaqzadeh and Aurangzeb, and John sir, like you said, for same. What was it that attracted you to this character or this film? Both of you. I love the script. When I heard the script the first time, I loved it. Then I met Ekta and Mohit in the office. I was totally floored by the script. It's unbelievable.
And I think Mohit is he's executed it even better. So it's absolutely fantastic. Yeah, I think most importantly, I was dying to do an ensemble. I was dying to do a film that brings people together on the big screen to celebrate what I've grown up watching. And what you're talking about, the grey character part, yes, I've been very, very fortunate. Pehli film se hi, there has been enough shades in the kind of roles I've done, whether it's Aurangzeb or, like you said, Ishak Zadeh, my starting point also. I think both those factors, I never have been scared of playing great. So it's exciting for me to come back to where I started. I've done Aap Girlfriend with him, I've done Key and I've done Two States, I've done all sorts of films, but I always wanted to go to the dark side and to do it in this kind of a setup. You know, at the end of the day, you need to trust people when you work with them. Script तो बहुत अच्छी थी, लेकिन साथ में I think for somebody like me who was coming back into doing something so I would say fun and dark, you need to know that your director knows the space better than even you. And he's somebody who has, like I remember watching Murder 2, which it is as exciting as Imran Hashmi's role. Prashant Narayanan played the villain. So director that can bring out that darkness and still make you have a story. हर villain की एक origin होती है, हर villain का एक reason होता है वो villain क्यों बनता है. वो मुझे बहुत exciting that I had in Mohit and the team with the producers and having such an ensemble. For me, it was a no-brainer actually. And Disha. There's a I had gone through him the villain one also. So this time when I went, he said, "ये वाला चाहते नहीं तू." I think I called up Arjun and said, please do it. He went and he said, "अच्छा तू second part के साथ ये वाला चाहते नहीं तू." That is a fact. उस समय मेरे तेवर कुछ और थे. मैं ऑलरेडी तेवर कर रहा था, मेरा मजाक आप प्लीज हेडलाइन डालें तब लगा मैं अपने फादर की पिक्चर कर रहा था तो मैं नहीं कर पाया था उस समय. And that's the true reason. But this time when he did come to me, I said, yeah, it's destiny, and I think it's meant to be that I'm a part of this film, so I decided not to let it. And Disha, after Malang, then Ek Villain and Yodha, is it a conscious decision on your part to do action thrillers? I mean, I love action thriller as a genre. I've grown up on this. And I got really, really lucky to work with Mohit sir, with Malang. And I think he gave me that inspiration to go ahead and go all out. And yeah, I mean, I love this genre. I would love to do even more. It's my second film with him, and I hope Mohit sir is not bored of me yet because I'd love to work with him again and again. You know, like, normally people call up your guy friends and ask them that which action film masala I want to watch in the night, English, Japanese, anything. I call up Disha and I say, which is a good commercial Japanese or the film to watch? She'll give you Korean films. She's the girl who thinks like full on their hardcore. Hi everyone, over here, this side. Here. Shobhajit from IWM Buzz. I have my question for Arjun and John sir. John sir over here, right? Yeah, hi. Yeah, so the movie talks a lot about one-sided love. And often what happens, be it teenagers or anyone maybe above their 20s, one-sided love, when people fail in love, a lot of wrong things tend to happen. They tend to divert their energy towards all sorts of wrong reasons. So what I want to know from your end, being public figures, is that what would you say to those people who are probably heartbroken? How do they channelize their negative energy into something productive and constructive? What the theme of my film, correct? But that is what it is. I mean, principally, आपके सवाल में ही एक जवाब है, because you have to find something constructive. At the end of the day, I think जितने भी लोग यहाँ बैठे, सबका दिल कभी ना कभी टूटा है. Somebody calling up, somebody हाँ कि ना? अच्छा किसी ने या वो कौन महापुरुष? बाजी. आप स्कूल ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए. देखिए प्यार, मैं नहीं मानता कि प्यार आपको बचपन में क्या होता है. You grow up, you meet people, you travel. Love is something that will break you at times, but it is also what makes you, and you have to find the positive in that. And the theme of this film has all those shades in it. So I think advice देना is very, very silly because हमको नहीं पता उन पे क्या बीत रही है. Genuinely, in all genuineness, मुझे नहीं पता how to give advice where love is concerned, because beyond the point, how do you know what is happening in somebody's love story? But at the end of the day, I would say to be able to fall in love is amazing. To be able to rise after you fall in love and have your heart breaking is even more amazing, because you can actually understand the value of what life is. I feel दिल टूटना बहुत जरूरी होता है. उसके बिना आपको जिंदगी में वो रस नहीं मिलता. You know,
this film has a lot of that. There is a lot of heartbreak, and that happens to all of us. I feel there is some strange, mad joy also in going through a heartbreak and rising above and beyond it and becoming your own person after it. And I'm sure that a lot of people who have had terrible heartbreaks and breakups and heartaches, और उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को संभाला या उभारा है. So I think true credit to those people, and that is what a true lover is. You don't always get what you want, but you have to live your life and continue loving and wishing well for that person as well. Thank you, sir, for answering. John, sir, your views on this? Same. So I don't know why I'm in this press conference because Arjun is so fantastic with all these answers, and then when I see Disha and Tara here, that's the first thing I said. I said, "Hamari kya zarorat hai yaar?" This is lovely. John sir, आपके सामने अमित here from दैनिक भास्कर. अर्जुन आपके पास भी आ रहा हूँ. आइए खत्म करके जाइए. वो जो लुक है आप दोनों का, मतलब दाढ़ी में और वो आयोजन पुशन के लिए है या मतलब आपके दहरान और लेडी के लिए? अच्छा, आप आगे की बात करना चाहते हो तो आप जब इंटरव्यू करेंगे आप अभी फिलहाल संकेत मिल सके. ये लुक मतलब किस चीज? टॉप मोर यार, आई थिंक जो आप अभी पूछ रहे हैं ना, फिल्म की लुक की बात कर रहे हैं. अभी की लुक, ये मैं अभी तैयार होके आ गया हूँ, ये फिल्म की लुक ही है. इट्स वेरी सिमिलर टू आर्म रेस्ट and behaving in the film, so it's the same vibe. John sir की look, John बताएंगे तो better. I'm shooting there next. So दोनों कब शुरू करेंगे पुशन? वो अनाउंसमेंट कर सकें. You want to become my manager? No. अच्छा, दिशा एंड तारा आप दोनों के लिए तो आप दोनों ने मतलब इस फिल्म में कितना अभी दिखे आप कॉन्फ्रेंस के विलेन. तो दिशा और तारा, ओके, आप दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर के लिए क्या क्या किया इस फिल्म? पहले आप कर रहे. I just followed my director's advice, and also I remember watching a lot of these negative movies at night, and there was a point I was like, sir, I can't watch it anymore because it's just like making me into a different human. But yeah, I just followed what he told me. I think Mohit sir really knows what he wants, and then he just makes everybody's life easier. For the first time on set in Goa, we were shooting a segment of the film. I was like, wow. In Bollywood, congratulate the entire team. It looks superb. I mean, the trailer is superb. It's very stylized, well-taken, chilling, thrilling, whatever you can say. Like, I just need stylized, well-taken, chilling, thrilling, whatever you can say. Like, I just needed to ask each and everyone, अपनी life में कभी ऐसा कोई act anything हाथ काटा, ब्लड से लेटर लिखा है, anything उसका रहा कुछ काम किए आप लोग? Small. No, it's a bit late. I need commission for that also first. You did for, have you done anything for love? Any villainy? सीधा आदमी है. Think about it. I'll come to it. Very why me? Bhushan sir. Any Arjun, you say on my way. I know one thing about John. I can say something about John. John has the most subtle and cold way to be sarcastic. It's a great, like the day I'm looking overweight, I put on 10 kilos. You're looking very thin. Baba, you're looking so good, Baba. Baba, today very good. This. I've not seen better style in that. आप सबको पता, अच्छा सॉरी डिविएटिंग, आप सब जो इधर बाबा 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 बोलते हो ना मुझे, वो बाबा बाबा कहाँ से चालू हुआ? यहाँ से संजय दत्त से. अरे बाबा जवाब दोगे आप सब लोग यार, विलिनी मुझे नहीं पता यार. I can't remember all that. Genuinely थोड़ा ज़्यादा याद है. चाइल्ड इन स्कूल टाइम कभी यार स्कूल टाइम में अगर अपने नस काट रहा था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती नहीं हाँ नहीं यार, मेरे लाइफ में कुछ विलेन है. मतलब my best friend and me, I went to my best friend one day and said I like this girl. Will you find out what she thinks about me? वो मेरी लाइफ का विलेन बन गया.
asked about himself and he started reading around. आने में 2 सेकंड लगेगा फॉर्मेट बनना ना तो यार ऐसी चीजें हुई है लाइफ में. मैं एक्चुअली विलन ज्यादा स्क्रीन पे प्ले करता हूँ ऑन ऑफ स्क्रीन. एक तो आपने भी कहा कि यू आर अ विलेन काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन आपने कभी कुछ नेक्स्ट किया हो? क्वेश्चन You know, the tagline of this film is heroes don't exist. You know that. I don't think anybody on this stage can say that they're not an ethic villain. In love, everyone has, and I had proposed in that episode. मोहित, जैसे एक कॉप विलन का यूनिवर्स बनेगा या नहीं? हाँ मोहित बताओ. पहले ये चल जाए. 8 साल लगा ये स्क्रिप्ट लिखने में. I think 8 साल बाद ये स्क्रिप्ट आई. And I think what's important is, yes, we definitely would think about that. That's why there are connections to the previous part. But it's important that this film does well. And more than, such a day that bed. And for a project, or just because everyone else is doing it. But when we generally feel we can sit here after COVID, after everything, and promote it day and night, that's how film should be made. भूषण सर, आपके साथ तो ये मतलब फिल्म जिस बजट की थी और आप और एकता दोनों अपने अपने इंडिविजुअली मतलब कैपेबल हैं कि इस फिल्म को इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस कर सकते थे, तो फिर दोनों ने मिलकर क्यों प्रोड्यूस किया इसे? एक और 11 इसीलिए. और पिछले 2 सालों में कोविड का जब मतलब ये चला है पूरा टर्म, तो ऑडियंस की टेस्ट बदल, ठीक है, ऑडियंस कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी हिंदी की फिल्मों से. तो आप लोगों ने भी, आपने और एकता जी ने, मोहित जी ने ये मतलब सोचा कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट में कुछ और चेंजेस किए जाएं कोविड के टेस्ट के हिसाब से, या फिर वही स्क्रिप्ट रखी है? It was written before, but there was a complete. You're right. We rewrote it completely, and that's when Kanika also came on board, and we rewrote the whole thing during COVID because it was clear both Ekta and Bhushan ji को दुनिया सेम नहीं रहेगी. There is a theatre experience and there is a home experience, and we want to go out and make a theatre experience with us. Johnson here. Johnson here. मोहित सर, It's really good to see you. और जिस तरह से आप आज बैठे हैं, एकदम मासूम बच्चा लग रहे हैं. With all due respect, एकदम कोना दे दिया है आपको बैठने चुपचाप, जब कहा जाए तब बोल. He is in character. हटेगी ना देखना फिर क्या. सर, जब मैं करता हूँ, काफी कामयाब फिल्म रही है और रितेश देशमुख के किरदार को आज तक याद करा जाता है. जितना हमने ट्रेलर में देखा उससे एहसास तो ये होता है कि आप ही विलन हैं. तो देयर बी अ कंपैरिजन, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? We just hope that the franchise does well. और मेरे हिसाब से I think this film is fantastic. So I don't think there'll be a comparison. I think there'll be a celebration after this film. So I really hope for Bhushan, because I'm working with him on so many films. Ekta is we're from the same school also, and also she's lovely, and worked with her in a film before, Shootout at Vadala. तो मैं यही hope करूँगा कि this film does well for all of us, and for Mohit, who I'm totally in love with before and after this film. He's made such a beautiful film. एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई है, ट्रेलर बहुत अमेजिंग है. बोल लो यार. जॉन सर, ट्रेलर बहुत अच्छा है और एक्सपेक्टेशन पहले से ज्यादा हाई हो जाएंगी क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा करना है, क्योंकि ट्रेलर इज ऑलवेज द फेस ऑफ द फिल्म. जब इस तरह की एक फिल्म की फ्रेंचाइजी आती है, उसका सेकंड पार्ट बनता है, जब आप हिस्सा बनते हैं या कोई भी शख्स उसका हिस्सा बनता है, स्पेशली मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? आर यू नर्वस और एक्साइटेड? No, I think finally it's the audience, right? You have to respect the audience, and they have to see the film. So you can promote it as much as you want to, you can do whatever, but finally it's the film that's going to talk. So excitement जरूर है क्योंकि we've all loved what we've seen. So there's a lot of excitement, but it's up to the audience. What are the pressures on you as a producer, and what is the idea of sequels for you? See, pressures तो रहते हैं लेकिन benefits ज़्यादा रहते हैं because it's a very famous franchise होती है, जो hit franchise होती है, उसका benefit ज़्यादा मिलता है. Like we got in भूल भुलैया after I guess we made after 14 years,
ये 8 साल बाद बन रही है, तो वो बेनिफिट्स ज़्यादा रहते हैं. आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रेशर रहता है अगर आपके पास सेम डायरेक्टर है, गाने हैं, सब कुछ है, एंड वी हैव सच अ ब्यूटीफुल स्टार कास्ट, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है. लेकिन यस, ऑब्वियसली कंपैरिजन लोगों के माइंड में तो रहता ही है. ऐसे सुपर हॉट हैंडसम मेल स्टार्स और सेक्सी सुपर हॉट फीमेल स्टार्स एक साथ आए तो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे उसको एक विलन भी सुपर विलन बोलना चाहिए. एज अर्जुन टोल्ड कि उनकी लाइफ में उनका जो दोस्त था वो उसको हीरो समझते थे लेकिन विलन निकला. आप तीनों से पूछना चाहूंगा कभी ऐसा हुआ है जिसको आप हीरो समझा वो विलन निकला या वाइस वर्सा, जिसको विलन समझा वो हीरो निकला? ऐसे हम तो I don't think so. एक्टर ने बनाई थी, ये तो बहुत फिलोसॉफिकल क्वेश्चन. आप हम सबसे पूछ रहे हो. आपने तो बताया ही कि आपने एक बार मैं बोलना बंद कर देता हूँ. I honestly don't think so hard. Your questions are really complicated. And I'm a very simple guy. इनके questions भी काफी complicated थे. It's like one quiz contest going on here. And I'm here for the film. And I'm here to celebrate a good film with some nice questions. And I think we've got a fantastic producer, two fantastic producers, fantastic cast, outstanding director, fantastic partners sitting here. So, अगर इनके बारे में कुछ पूछे, then I'll be very happy. I'm happy Anil Thadani is distributing this film, so I'm very excited. Our friend Shad Randhawa is in this film. Shiv Chandana यहाँ पे, Alok, Asim, Varun, Amul. I mean, fantastic people here who made this film happen. तो इनको credit देना चाहूँगा मैं. Come on, boys. Mohit sir, on your right. Yeah, on your right, sir, right. Oh, yeah. Sir, you have cast two hunk of Bollywood. That is John sir, who is physics freak, and of course Arjun sir, who मैं आपके गले मिलना चाहता हूँ. आपने मुझे जॉन की तरह हम बोला दिया आज. जा मिल लो भाई. Sir, when you were making this movie, and all both were like, movie में आपका बताया गया कि both bare body also. तो आपने जैसे इनको बाबा बोलते हैं, जिससे आपने उनको कुछ अपने ओर से टिप दिया था कि ये रोल की. मैं फिल्में ऐसे बनाता नहीं हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊं. मेरा काम है, I think you develop the character with the actor. Okay, and you have to play to the actor how he's doing it. You can't convert them to become somebody else. But I must say, it's not just the men. मुझे one of the girls, I'm not mentioning who, okay, on the spot we felt कि I need to hold a hammer and enter the scene. And it was her idea, not mine at all. So I think the process of making a movie cannot be a regiment. You have to play with the actors, and most importantly, जितनी बुरी चीजें करनी थी वो थोड़ा डिस्कवर कर लिया इन लोगों के बाद में. I think that was a big advantage. सबके सीक्रेट पता है अभी मुझे. Hi, one last question, right? Hi, Sharma this side from Villian. तारा एंड दिशा, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि ट्रेलर में तो हमने सिर्फ एक ही सीन आप दोनों का एक साथ देखा है, पर आप दोनों ने कितना स्क्रीन स्पेस एक साथ शेयर किया है फिल्म के अंदर, इसके बारे में बताइए, और कितना एंजॉय किया है इससे. अरे ये तो आप जो फ्री में 29 July is when you'll get to know. हेलो. कितना एंजॉय किया. एंड जॉन सर, आपसे भी एक सवाल ये है कि सर जब हम फिल्म की बात करते हैं, जैसे आपने कहा ये आपका कमबैक है, तो बिपाशा के साथ में आपका जो बॉन्ड था या जो स्क्रीन स्पेस आपने जो शेयर किया है वो आज तक हम याद करते हैं और बहुत ही पसंद किया है. वेल, दिशा के साथ क्या वैसा ही बॉन्ड और वैसा ही स्पेस देखने मिलेगा अपने आप? I think there are certain actors that I've worked with in the past जिनके साथ the chemistry was lovely, and I think with Disha it was absolutely fantastic. And you'll see it when you watch the film. क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ ऐसे होता है कि when you get on screen, you see two people and you say, it's working, it's really working. So I think with Disha, we felt that it was really nice. Special. I was sorry, but I was lucky to. I was an assistant working on the set where John used to do love stories. So when I met John, I said I want to do a love story. I want to do a more than a heartbreak story with you. And I think we never worked on an action film. I wasn't there in Elan, but I was
was there in the beginning, and I think John's not done that, and he's so good at it. That so I was so happy when it was like going back to where we all started, and we could play this thing. So I think I have tried to do something different with John. He's not just the action hero; he's the man with the heart, a villain with the heart. Go. One last question, ladies and gentlemen. Yeah, on your right. Yeah. On your right. मेरा सवाल मोहित सर से है. On your right, sir. आकाश है फ्रॉम नवभारत. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टारकास्ट से तो हम सभी ने बात की, लेकिन फिल्म का ट्रेलर जैसे हमने देखा तो रितेश के भी कुछ ग्लिम्सेस दिखाए गए हैं. तो हम यही जानना चाहते हैं कि क्या इसके रिटर्न्स में लाइक इक्विवेलेंट रिटर्न्स में हम रितेश की भी लाइक कमबैक करते नजर आएंगे? अगर इसका जवाब मैं सच्चा दूं तो आई थिंक दे विल किल मी द प्रोड्यूसर्स. उसके लिए आपको थोड़े पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, एंड यू विल हैव टू वॉच द फिल्म. बट यस, देयर इज अ फाउंडेशन. ये सिर्फ कहानी प्रोजेक्ट नहीं थी. देयर इज अ लॉट ऑफ राइटिंग दैट हैज गॉन इनटू दिस फिल्म, एंड आई थिंक यू शुड स्टॉक असीम ऑन दिस. Thank you so much, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, and would like to invite on stage some very important people जिनके बिना शायद ये नहीं हो पाता. Shiv Chandra साहब from T Series, give it up for him, ladies and gentlemen. Ms. Ruchika Kapoor from Balaji, Amol Mohan साहब is here, Mr. Anuj Adani from AA Films. Asim sir, please आइए. Amol. Hello sir. गुरु हो गया भाई. Mr. Thadani, of course.